Hello students, welcome to S Maths. Last video रे हमें नंबर 4 C bit पर्यंत सॉल्व कर देछन्ते. Now अभी स्टार्ट करिबा नंबर 4 D bit. Find the equation of plane passing through the point -1, 3, 2 and perpendicular to the planes x plus 2y plus 2z equal to 5 and 3x plus 3y plus 2z equal to 8. तो हमारा गिवन देछि प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 3, 2 एंड परपेंडिकुलर टू टू प्लेन्स गिवन देछि. लेट P1 तो यार इक्वेशन मध्ये गिवन देछि. लेट दिस वन ला P2 तो हमर रिक्वायर्ड प्लेन ला P. तो इटा रफ डायग्राम अछि. तो इक्वेशन रो एग्जैक्ट डायग्राम इटा होबनी, बस मते खाली एक्सप्लेन करियार अछि. तो मोटे रफ डायग्राम करछि. नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन. तो P and P1 given that perpendicular, यदि परपेंडिकुलर अछि तो यार नॉर्मल भी डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू n. तो गिवन देछि P P2 भी परपेंडिकुलर, यदि V भी परपेंडिकुलर अछि तो यार भी नॉर्मल थीवो डेफिनेटली एंड परपेंडिकुलर टू n थीवो. मींस हमको मिडला कंडीशन n परपेंडिकुलर टू n1 also n perpendicular to L2. तो हमको दी दी कंडीशन मिल रही है n perpendicular to n1, n perpendicular to n2 और थर्ड कंडीशन ला प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 3, 2 हमको गिवन देछि. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करिवा. लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन be a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equals to 0. So this one number equation number 1. Equation number 1. तो এটা हमको फाइंड करेर अछि. या पे मते पॉइंट दरकार और डायरेक्शन ट्रेसेस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन दरकार. तो ऑलरेडी करना प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट गिवन देछि. तर मींस ला सिंस -1, 3, 2 lies on the plane, so this implies x1 equal to -1, y1 equal to 3 usually and z1 equals to 2. Now put कर equation 1 रे. Therefore a into x minus -1 plus 1 plus b into y minus 3 plus c into z minus 2 equals to 0. तो हमको इक्वेशन रो बाकी खाली a b c दरकार. देन हमरो सॉल्यूशन कंप्लीट हे जीवो. तो a b c फाइंड करिया पे भी हम पाखरे और दी दीटा कंडीशन अछि. n परपेंडिकुलर टू n1, n परपेंडिकुलर टू n2 अछि. देन डायरेक्शन direction ratios of the normal n to the plane P1 to the plane P are A, B, C. तो डायरेक्शन रेशियोस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन इट हमर रिक्वायर्ड प्लेन अछि ना. तो यार डायरेक्शन रेशियो मो पाखरे A, B, C अछि. देन डायरेक्शन रेशियोस of the normal n1 to the plane P1 are. तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल n1 टू द प्लेन P1 ये मेरा फर्स्ट प्लेन अछि. तो यार डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ला 1, 2, 2. तो 1, 2, 2. देन सेम द डायरेक्शन रेशियोस of the normal n2 to the plane P2 are. The second plane normal डायरेक्शन रेशियो ला 3, 3, 2. 3, 3, 2. तो मते n, n1, n2 रो डायरेक्शन रेशियोस मिल गला. बट हमो गिवन देछि n परपेंडिकुलर टू एमती. तो p परपेंडिकुलर टू P1 अछि. तो implies that n perpendicular to n1. So this implies
P perpendicular to P1 means N perpendicular to N1 अच्छी. तो using perpendicular condition 1 into A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals 0. Formula apply करी 1 into A plus 2 into B plus 2 into C equals to 0. The equation number 3. Since P perpendicular to P2, so this implies normal perpendicular to normal 2. So using perpendicular condition 3 into A plus 3 into B plus 2 into C equals to 0. तो मैं अप्लाई करছি perpendicular condition formula A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0. नंबर 4. बस हमको 3 और 4 इक्वेशन सॉल्व करके ABC फाइंड करिए छे. तो 3 1 into A plus 2 into B plus 2 into C equals to 0 and fourth equation 3 into A plus 3 into B plus 2 into C equals to 0. So using cross multiplication formula A by B by C by A by B1 C2 minus B2 C1 2 into 2 4 minus 6 B by C1 A2 2 into 3 6 minus 1 into 2 2 C1 A2 minus A2 C1 then C consider करें A1 B2 minus A2 B1 1 into 3 3 minus 2 into 3 6. So this implies A by minus 2 equals to B by 4 equals to C by minus 3. So A by minus 2 B by 4 C by minus 3 मिला. Let nature this equal to K. Let this equal to K. तो first and last equate करीबा तो तुमको मिला A equal to minus 2K, B equal to मिला 4K and C equals to minus 3K. तो हमको A, B, C रा values मिलगला. ना A, B, C कोठे पुट करीबा ना equation 2 रे पुट करीबा. Therefore the equation of required plane is A equals to minus 2K into x plus 1, B equals to 4K into y minus 3. હું equation 2 રે यूज करছি plus minus 3K into z minus 2 equals to 0. Now K तो common अच्छी K common नीचे minus 2 multiply करी minus 2x minus 2 4 multiply करें 4y minus 12 minus 3z plus 6 equals to 0. So this implies K non-zero. तो ये minus 2x plus 4y minus 3z minus 2 minus 12 minus 14 ये ला plus 6 minus 8 equals to 0. Since K is not equals to 0, then minus multiply कर दवा 2x minus 4y plus 3z plus 8 equals to 0. This is the equation of plane. Repeat bisecting the line segment joining minus 1, 4, 3 and 5, minus 2, minus 1 right angles. तो हमको find करें equation of plane, but equation of plane bisecting the line segment joining these 2 points at right angles. तो उठे rough diagram करेगा. Let A be the first point minus 1, 4, 3. And B be the second point 5, minus 2, minus 1. तो हमारा required plane ला P. तो हमको P तो find करिए रचे P रो equation find करिए रचे. But given दिचे करना equation of plane bisecting the line segment joining these two at right angle. तो हमारे ये angle ना मतलब 90 degree भी given दे दिचे. तो ये 90 degree अच्छी. तो obviously करना हमारा normal तो एमती हमारा perpendicular to plane था. ये perpendicular ये भी तो perpendicular तो normal parallel to AB मिलेगा. तो मतलब मिलेगा normal to parallel to AB. तो हमारे AB रा direction ratios मिलेगा मतलब normal रा direction ratio मिल जाएगा. तो ये तो तुमको bisect करचे मैंने definitely this point is midpoint. Suppose ये हमारा C point तो C टा midpoint of AB. तो midpoint formula रे C मिल जाएगा. Then हमको normal रा direction मिलेगा. Then हमको equation of plane easily मिल जाएगा.
Let A point be minus 1, 4, 3 and B point 5, comma, minus 2, comma, minus 1. Since C is the midpoint of AB, therefore C coordinate x1 plus x2 by 2, minus 1 plus 5 by 2, y1 plus y2 by 2, 4 minus 2 by 2, then 3 minus 1 by 2, z1 plus z2 by 2. So using midpoint formula, find the coordinate of C. So this equals to C point 4 by 2, 2, 2 by 2, 1, 2 by 2, 1. तो हमको C point मिलेगा means on the plane 1 point मिलेगा. तो हमको x1, y1, z1 मिलेगा. Then कौन करेगा? ना हमको direction ratios of AB find करियर अच्छे. तो direction ratios of AB are x2 minus x1, 5 minus minus 1 plus 1, minus 2 minus 4, minus 1 minus 3. So equals to 5 plus 1, 5 plus 1 equal to 6, minus 6, minus 4. तो मतलब direction ratios of AB मिलेगा. Since normal parallel to AB, the parallel अच्छी, then direction ratios of normal in are તમે exact 6 minus 4 यूज करिवनी 6k then minus 6k then minus 4k यूज कर दो. तो मते डायरेक्शन रेशियोस ऑफ नॉर्मल मिलिगला मींस मते एबीसी मिलिगला. तो ऑलरेडी पॉइंट मिल जाई छी x1 y1 z1 मिल छी. देन अप्लाई करिवा फार्मूला. देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ required plane is A into x minus x1 plus B into y minus y1 plus C into z minus z1 equals to 0. So implies that A equal to 6k into x minus x1 equal to 2 plus B equal to minus 6k. So minus 6k into y minus y1 equal to 1, C equal to minus 4k, z minus 1 equals to 0. So implies that k common achi, 6 multiply kali 6x minus 12 minus 6y plus 6 minus 4z plus 4 equals to 0. K non-zero, so implies that 6x minus 6y minus 4z minus 12 plus 6 plus 4 minus 12 plus 10 equal to minus 2 equals to 0. तो 2 रे भी कैंसिल हो जाउची. तो implies that 3x 2 रे डिवाइड कर दो minus 3y minus 2z minus 1 equals to 0. So this is our equation of required plane. F bit, find the equation of plane parallel to the given plane and at a distance 3 units away from it. तो हमको equation of plane दरकार, but required plane is parallel to this plane अच्छी and distance between two parallel planes equal to हमको given देची 3 units. तो ଗୋଟେ rough diagram करिवा. A given plane, suppose given plane को मु P1 यूज करी, तो 2x minus y plus 3z plus 1 equals to 0. This is our required plane. The required plane को मु P यूज करी, P for the required plane यूज करी. Then the distance between two planes, तो distance between two planes equal to हमको given देची 3 units. तो already formula अच्छी, the equation of plane parallel to this plane is 2x minus y plus 3z plus lambda equals to 0. तो हमको फॉर्मूला यूज करके प्लेन रो इक्वेशन मिलगला, बट हमको लैम्बडा अननोन अछि. तो लैम्बडा फाइंड करे पे हम पर कंडीशन कोन गिवन दे छै ना डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स इक्वल टू 3 यूनिट. बस ये डिस्टेंस यूज करके हमको इजीली लैम्बडा मिल जिवो. लैम्बडा मिल गेले इक्वेशन ऑफ प्लेन भी तोरा आस जिवो. द इक्वेशन ऑफ प्लेन parallel to the plane
2x minus y plus 3z plus 1 equals to 0 is 2x minus y plus 3z plus lambda equals to 0. तो मैं जब भी फाइंड करिबो इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन तो x y z कोएफिशिएंट को किछि चेंज करिबनी ओनली करना कांस्टेंट पार्ट को लैम्डा करो k करो तुम जहां भी यूज करिबो तो दिस वाला रिक्वायर्ड प्लेन बट इथरे लैम्डा अननोन अछि तो लैम्डा फाइंड करे पे मते यूज करियर अछि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स इक्वल टू 3 यूनिट्स. तो गिवन दैट distance between two planes equals to 3 units. तो two planes का मतलब है two parallel planes. The distance between two parallel planes का formula अच्छी d1 minus d2 divided by root over of a square plus b square plus c square the mod equals to 3 units. तो here d1 तमे d1 कोटा नबो यदि मु d1 1 नेबी तो d2 लैम्डा नेबी तो तुमे चेंज करले भी हबो d1 नबो लैम्डा d2 इक्वल टू 1. तो मु d1 इक्वल टू 1 यूज करछि d2 इक्वल टू लैम्डा तुमे चेंज करले भी किछि प्रॉब्लम नै आंसर आसी जेबो. तो a इक्वल टू 2 रो स्क्वायर तो 2 रो स्क्वायर इक्वल टू 4 minus 1 रो स्क्वायर इक्वल टू 1 and 3 रो स्क्वायर इक्वल टू 9 equals to 3. So this implies 1 minus lambda divided by 9 4 13 1 14 the root over of 14 रो mod equals to 3. That implies that 1 minus lambda by root 14 equals to plus minus 3. So this implies 1 minus lambda equal to plus minus 3 into root 14. So implies that lambda equals to 1 plus minus 3 root over 14. तो हमको lambda मिल गया तो lambda मिल गया बस equation 1 report करेगा to find the equation of required plane. Therefore the equation of required plane two x minus y plus 3z plus 1 plus minus 3 into root 14 equals to 0. बस इला आंसर बहुत इजी खाली जस्ट पैरेलल प्लेन्स रा फार्मूला यूज करिबा देन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स रा फार्मूला यूज करी के लैम्डा फाइंड करिया लैम्डा फाइंड के आंसर इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन. First bit, A bit, write the equation of the plane 3x minus 4y plus 6z minus 12 equals 0 in intercept form. तब हमें first intercept form को change करेगा and hence obtain the coordinates of the points where it meets the coordinate axis. तो coordinate axis को जोठी meet को से point भी find करेगा और intercept form को हमको change करियर अच्छे. तो 3x minus 4y plus 6z minus 12 equal to 0. तो हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म थी ना x by a plus y by b plus z by c equals to 1. तो मतलब ए फॉर्म को चेंज करियर अच्छी तो implies that 3x minus 4y plus 6z तो 12 टा राइट साइड को आगे शिफ्ट कर दो तो शिफ्ट कर ले 12 है गला तो हमारा 1 दरकार देन 1 यदि 1 दरकार देन डिवाइड बोथ साइड्स बाय 12 तो डिवाइड कर ले 3x minus 4y plus 6z divided by 12 equals to 12 by 12. Then 12 divide करो 3 by 12 equal to 1 by 4 तो x by 4 minus y by 3 4 by 12 1 by 3 plus 6z by 12 equal to z by 2 equals to 1 मिलना. तो this implies x by 4 plus y by minus 3 then हम फॉर्मूला रे प्लस अछि त हम प्लस 3 एक्सप्रेस करछि प्लस z by 2 equals to 1. तो हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म को चेंज हो गया तो हमारा क्वेश्चन रा फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया and hence obtain the coordinates of the point where it meets the coordinate axis. तो कोठी कोठी मीट करी थाए x axis y axis z axis ला origin. सपोज हमारा प्लेन अच्छी तो प्लेन करना intersecting the x axis at a
तो हमरो ए डिस्टेंस टा ओ डिस्टेंस टा x इंटरसेप्ट दिस वाला ए डिस्टेंस तो a कोऑर्डिनेट a, 0, 0 तो ये ला b जोटी इंटरसेक्ट करछे b y एक्सिस को दिस वाला b तो ये डिस्टेंस टा हमरो b डिस्टेंस यदि b डिस्टेंस अछि तो 0, b, 0 ला हमरो पॉइंट तो ये डिस्टेंस टा हमरो c लेट दिस वाला c तो ये जो OC डिस्टेंस अछि ये ला c तो जोटी इंटरसेक्ट करछि से पॉइंट आला 0, 0, c कैन ऑन द z एक्सिस x coordinate 0, y coordinate 0 on the y axis, x coordinate 0, z coordinate 0 on the x axis, y coordinate and z coordinates 0 तो इते भी 0 अछि हमरो तो therefore मते a equals to मिडला 4 तो a equal to here x intercept तो x intercept equal to 4 मिडला b equals to y intercept तो this equal to -3 मिडला c equal to z intercept equals to मिलता 2 तो हमको a b c मिल गया therefore required points are a coordinate for a, 0, 0 तो this one 4, 0, 0 then b coordinate 0, b, 0 तो 0, -3, 0 सेमती c coordinate आंसर मिल जो 0, 0, 2 तो आंसर 4, 0, 0, 0, -3, 0, 0, 0, 2 Number 5 रा B bit. Write the equation of the plane 2x minus 3y plus 5z plus 1 equal 0 in the normal form. तो हमरो given equation टा general form देछि तो normal form को change करिबा then अछि find its distance from the origin तो हम distance of the plane from the origin भी find करिबा last part रे अछि find also the distance from the point तो distance of the plane from the point भी हमको बाहर करे छै तो तीन टा पार्ट अछि normal form को change करिबा distance from the origin find करिबा और distance from the point 3, 1, 2 हमको find करियर अछि तो 2x minus 3y plus 5z plus 1 equals to 0 ये तो हम given plane दे छी तो ये given plane टा हमरो general form रे अछि तो general form थिला ax plus by plus cz plus d equals to 0 तो कैपिटल था स्मॉल था सेते किछ प्रॉब्लम नै तुम कैपिटल भी यूज करि परिबा स्मॉल भी यूज करि परिबा बट जनरल फॉर्म रो नॉर्मल फॉर्म को केमते चेंज करे से भी हमरो थ्योरी पार्ट डिस्कस है छी तो नॉर्मल फॉर्म थिला lx plus my plus nz equals to p थिला तो हमरो abc करना डायरेक्शन रेशियोस ऑफ द नॉर्मल थिला lmn थिला डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द नॉर्मल बट इट p रा कंडीशन थिला p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन तो हमर दी नॉर्मल फॉर्म को चेंज हे जो त हमर सेकंड पार्ट टा सॉल्व हे जो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टा हमर सॉल्व हे जेबो आ खाली थर्ड पार्ट हमको फाइंड करियर अछि तो जनरल रो नॉर्मल को केमते चेंज करिबा मो ऑलरेडी थ्योरी रे डिस्कस करि सछि तो मोर फर्स्ट स्टेप ला 2x - 3y plus 5z कांस्टेंट राइट साइड को शिफ्ट कर दवा तो शिफ्ट करले -1 ये कांस्टेंट यदि नेगेटिव थिबो देन मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय माइनस साइन यदि पॉजिटिव थिबो किछि चेंज मल्टीप्लाई करिबोनी यदि नेगेटिव थिबो देन मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय माइनस साइन माइनस मल्टीप्लाई करले -2x माइनस माइनस प्लस 3y माइनस 5z इक्वल्स टू 1 तो ये मोर फर्स्ट स्टेप शिफ्ट कर लिए सेकंड स्टेप रे माइनस मल्टीप्लाई के लिए देन थर्ड स्टेप रे कोन करिवे ना डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तो मतलब डिवाइड करियर अछि तो रूट ओवर ऑफ a इक्वल टू 2 अछि 2 रो स्क्वायर b इक्वल टू -3 अछि -3 रो स्क्वायर c इक्वल टू 5 अछि तो 5 रो स्क्वायर तो दिस इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 25 तो दिस वन ला 29 ये ला 9 रूट ओवर 38 तो मते रूट 38 रे डिवाइड करियर अछि इक्वेशन को तो डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय रूट ओवर 38 -2x plus 3y minus 5z by root over of 38 equals to 1 by root over of 38 तो implies that root 38 divide कर ले -2 by root 38 x plus 3 by root 38 y minus 5 by root 38 z equals to 1 by root 38 तो this implies तो हमको lx my plus nz equals to p फॉर्म रे मिल गला तो ये माइनस अछि तो ये फॉर्म चेंज कर दो -2 by
root over of 38 into x plus 3 by root 38 into y plus minus 5 by root 38 z equals to 1 by root 38. Now check करो तुम्हारा lx plus my plus nz equal to p. तो ये नॉर्मल फॉर्म को हेला बोले केमती कन्फर्म हबो मैं याको स्क्वायर करिवो ऐड करिवो देखो तुमको 1 मिलिवो कोन पे ना l स्क्वायर plus m स्क्वायर plus n स्क्वायर equal to 1 थाए. तो मोर फर्स्ट पार्ट टा कंप्लीट हे गेला नॉर्मल फॉर्म आसी गेला. सेकंड पार्ट थिला फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. तो ओरिजिन डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इक्वल टू p. तो देयरफॉर हमको p इक्वल टू मिलला 1 by root 38. तो implies that distance of the plane from the origin equals to 1 by root 38. तो मोर सेकंड पार्ट भी सॉल्व हे गला. देन मते खाली थर्ड पार्ट टा सॉल्व करे छी डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द पॉइंट. तो ऑलरेडी मते पॉइंट गिवन देछि 3, 1, 2. प्लेन इक्वेशन अछि 2x minus 3y plus 5z plus 1 equals to 0. तो हमारा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन रो फार्मूला अछि दैट इज ax plus by plus cz plus d by root over of a square plus b square plus c square. The distance of the point from the plane the formula ax plus by plus cz plus d by root over of a square plus b square plus c square. So this is equal to x. तो हमें x केमती फाइंड करिबा सिंपल मेथड खाली x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट तुमको x y z रे एटी पुट करियर अछि. तो 2 into 3 minus 3 into 1 plus 5 into 2 plus 1 divided by root over of a square. A square equal to 4, 2 रो square, b square equal to minus 3 रो square equals to 9, 5 plus square 25, so equals to 6 minus 3 plus 10 plus 1 by root over of 38 equals to 10, 1, 11, 1, 16, 16, 17, 17 minus 3 equal to 14 by root 38. So therefore distance of the plane from the point is 14 by root over 38. La answer. तो गोटे इंपोर्टेंट पार्ट को छी यदि मु स्मॉल एबीसी यूज करे छी तो किछि प्रॉब्लम नहीं. कैपिटल एबीसी कले तुमरी सब कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी थीबो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी. तो कैपिटल स्मॉल रे किछि प्रॉब्लम नहीं. तुमरो स्मॉल लेटर थिले भी सेही फार्मूला आसीबो कैपिटल थिले भी सेम फार्मूला ही आसीबो. खाली स्मॉल थिले स्मॉल यूज करिवो कैपिटल थिले कैपिटल यूज करिवो. C bit, find the distance between the parallel planes 2x minus 2y plus z plus 1 equal 0 and 4x minus 4y plus 2z plus 3 equal 0. बस हमको distance between parallel planes find करे अछि. तो यार एट एप्लीकेशन हमें ऑलरेडी सॉल्व कर सारिनी. खाली सिंपल फार्मूला यूज करके हमको मिल जाओ distance between parallel planes. तो P1 फर्स्ट प्लेन मते गिवन देछि 2x minus 2y plus z plus 1 equals to 0. Second plane 4x minus 4y plus 2z plus 3 equals to 0. But इतने प्रॉब्लम करना चाहिए ना ये 2 minus 2 1 अच्छी here 4 minus 4 2 अच्छी. यदि कोफिशिएंट ऑफ x y z सेम नथी हो तले हमें डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन से फार्मूला अप्लाई करि परिबनी. तो हमको ये सेम करियर अछि. तो जे सेम करियर अछि तो तुम इतने 2 डिवाइड करले भी सेम हे जीवो अदर एसिटी 2 मल्टीप्लाई करले भी सेम हे जीवो. तुम चॉइस तुम कोटा भी करि परिबो. तुम फर्स्ट इक्वेशन रे 2 मल्टीप्लाई करी 2 मल्टीप्लाई करले 4x minus 4y plus 2z plus 2 equals to 0. मु 2 मल्टीप्लाई करछि मोर फर्स्ट इक्वेशन मिली गेला. दिस इज मोर सेकंड इक्वेशन. देयरफॉर डिस्टेंस between parallel planes
equals to formula mod d1 minus d2 divided by root over a square plus b square plus c square. तो तुम्हें कैपिटल डी भी यूज करी परिबो, स्मॉल डी भी यूज करी परिबो। तो मु कैपिटल करली तो सब कैपिटल कर देछि, स्मॉल करले तुमे सब स्मॉल कर देबो। तो d1 minus d2 by root over of a square plus b square plus c square. So this equals to d1 equals to 2 minus d2 equals to 3 divided by root over of a square 4 square 16, b square minus 4 square 16, c square 2 square 4. So this equals to minus 1 by root over of 32 plus 4 root over 36 equal to 1 by 6. Minus 1 by 6 mod equal to 1 by 6 units. Therefore, distance between parallel planes equal to 1 by 6 units. Next question, number 6 first bit. The number 6 question is in each of the following cases verify whether the 4 given points are coplanar or not. तो तुम्हें टेक्स्ट बुक भी टिके टिके फॉलो करथिबो। तो verify whether the given points are coplanar or not. तो हम खाली coplanar कि नॉन coplanar चेक करियर अछि। तो या पई भी मेथड अछि, तो या पई भी फार्मूला अछि। तो मु फार्मूला दे दोछि, तुमे फार्मूला यूज करके इजीली चेक करि परिबो। 4 points A x1 comma y1 comma z1, B x2 comma y2 comma z2, C x3 comma y3 comma z3, and D x4 comma y4 comma z4 are coplanar if and only if determinant of x4 minus x1, x2 minus x1, x3 minus x1, y4 minus y1, y2 minus y1, y3 minus y1, z4 minus z1, z2 minus z1, z3 minus z1. Determinant equals to 0. If determinant of this equal to 0, then definitely 4 points are coplanar. तो ठीक है, मन पको हमरो इक्वेशन प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थिला। तो इसबो हमरो x y z थिला। तो x y z यूज करले मते प्लेन इक्वेशन मिलि जिवो। तो प्लेन इक्वेशन रे मु फोर्थ पॉइंट टा पुट कर देबी। यदि सैटिस्फाई करिवो देन मोर 4 पॉइंट्स है कोप्लानर। तो हमें से ही करिवो नाउ x y z प्लस रे फोर्थ पॉइंट टा पुट कर देबो। इफ डिटरमिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू 0 जिवो देन हमर 4 पॉइंट्स है कोप्लानर। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ x4 minus x1, तो मोर x4 equal to 1 अछि, 1 minus x1, x1 equal to 1 अछि, minus 1 अछि, minus 1, x2 x3 minus 1 इला 2. सेमती y4 1 minus y2 equal to 2 अछि, minus 2, then 1 और 1 y2 y3, then यूज करिए 2 minus z4 minus z1, 2 minus 3, then z2 0 and 3 0, this is z3 equal to 3. Now बस यार डिटरमिनेंट चेक करिबा, यदि 0 हो देन 4 पॉइंट्स are coplanar, नॉन 0 हमने 4 पॉइंट्स are non coplanar. तो this equals to 0 minus 1 minus 1 minus 2 minus 1 minus 3 1 minus 1 0. देन एक्सपेंशन करिबो 0 into जहां भी थिबो त हमर फर्स्ट टर्म टा 0 हो जिवो। तो 0 into एक्चुअली 0 minus 3 अछि, देन माइनस ऑफ minus 1 यूज करले डिलीट करिबो, minus 2 into 0 0 minus 3 into 1 minus 3 तेला प्लस 3, देन माइनस प्लस minus 1, तो minus 2 into minus 1 2 minus 1 into 1 minus 1. तो this equal it is 0 अछि, येला 1 3, तो this one the 2 plus 1 3 अछि, minus 3, तो 3 minus 3 equal to 0, hence 4 points are coplanar. जब भी हमको 4 पॉइंट्स है कोप्लानर प्रूफ करिवर अछि, तो यहाँ पे 2 मेथड्स है ना, यूजिंग 3 पॉइंट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। सेटा फर्स्ट स्टेप रे कर दबो,
फोर्थ पॉइंट प्लेन इक्वेशन रे पुट करिवो जदी सैटिस्फाई कला देन 4 पॉइंट्स आ कोप्लानर से मेथड भी तुम करि परिवो से मेथड जहां ए फार्मूला भी सेम थिंग बेटर हबो फार्मूला रे एलएचएस पार्ट सॉल्व कर दो जदी आंसर 0 आसीगला देन तुमरो प्रूफ हे जिवो 4 पॉइंट्स आ कोप्लानर तो ए बिट मु जेमती कली तो बी सी एंड डी तो ये तीनटा तुम्हें नीचे सॉल्व करिवो ए पार्ट तुमको होमवर्क देली तो एग्जैक्टली सेमती खाली जस्ट फार्मूला रे पुट करिवो यदि 0 हबो तो 4 पॉइंट्स आ कोप्लानर नॉन 0 हला माने 4 पॉइंट्स आ नॉन कोप्लानर तो ये तुम्हें नीचे सॉल्व कर दो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 रा फर्स्ट बिट फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस तो हमको चारटा बिट ए बी सी डी देछि तो ए बी सी डी हमको इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करियो अछि बट फर्स्ट बिट रे कंडीशन देछि प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन टू प्लेन्स हमर रिक्वायर्ड प्लेन टा पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन टू प्लेन्स एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट देछि 3 2 1 तो ये सॉल्यूशन पई मोटे एमते रफ डायग्राम करू छी जदि मु प्लेन डायग्राम करिबि सेटा एग्जैक्ट लागिवनी मु एमते लाइन करू छी बट सपोज रे कंसीडर करो प्लेन 1 दिस वन द प्लेन 2 तो हमरो रिक्वायर्ड प्लेन टा करना पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन सपोज तारा इंटरसेक्शन रे पास कला ये भी मोर प्लेन अछि दिस वन द रिक्वायर्ड प्लेन तो रिक्वायर्ड प्लेन टा करना पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 2 1 देछि रिक्वायर्ड प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 2 1 तो हमको p रो ही इक्वेशन फाइंड करियर अछि एक या पे ऑलरेडी हम पकरे फार्मूला अछि सिस्टम ऑफ प्लेन रे दिया अछि p1 + लैम्डा p2 तो p रो फाइंड करिवो तो यार इक्वेशन ला p1 + लैम्डा p2 = 0 तो हमें ए फार्मूला यूज करके p रो इक्वेशन पे फाइंड करिवा द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the intersection of two planes P1 and P2 is P1 plus lambda P2 equals to 0. इला सिस्टम ऑफ प्लेन रो फार्मूला प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स इज p1 plus lambda p2 equal 0 बट लैम्डा हमरो अननोन अछि त हमके एटी लैम्डा भी फाइंड करे अछि तो p1 equal to फर्स्ट प्लेन 2x plus 3y minus 4z plus 1 plus lambda into p2 3x minus y plus z plus 2 equals to 0 अछि तो दिस equals to 0 फर्स्ट प्लेन p1 plus lambda into p2 equals to 0 तो हमारा आंसर हे गेला बट इट लैम्डा अननोन अछि जो पन लैम्डा बिडिनी से पन सॉल्यूशन कंप्लीट हबनी तो लैम्डा फाइंड करे पे हम पर कंडीशन कोन अछि ना रिक्वायर्ड प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 2 1 तो द रिक्वायर्ड प्लेन पास करू छी तो ए पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन p अछि तो सिंस 3 2 1 lies on the plane p तो एक कोऑर्डिनेट है दिस कोऑर्डिनेट डेफिनेटली सैटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन तो तुम्हें x प्लेस रे 3 y प्लेस रे 2 z प्लेस रे 1 पुट कर दो तो दिस इंप्लाइज 2 into 3 plus 3 into 2 minus 4 into 1 plus 1 plus lambda into 3 into 3 minus 2 plus 1 plus 2 equals to 0 6 plus 6 minus 4 plus 1 plus lambda into 9 minus ये minus 2 plus 2 cancel is equal 9 plus 1 equals to 0 12 plus 1 13 minus 4 9 plus 10 lambda equals to 0 that is implies 9 shift करिवो 10 divide करिवो lambda equals to मिला minus 9 by 10 तो मते lambda मिल गेला then it put करिवो and find the required equation of plane therefore the required equation of plane is 2x plus 3y minus 4z plus 1 lambda equal to minus 9 by 10 so minus 9 by 10 into 3x minus y plus z plus 2 equals to 0 तो ये तो 9 by 10 अच्छी तो मते 10 एलसीएम नहीं के 10 मल्टीप्लाई करि परिबो और
मु पूरा होल इक्वेशन रे 10 मल्टीप्लाई कले 10 into 2x plus 3y minus 4z plus 1 तो ये 10 मल्टीप्लाई 10 कैंसिल हो 9 into 3x minus y plus z plus 2 equals to 0 then कले simplification कले हमारा आंसर आसी जीवा इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन मल्टीप्लाई कले 20x 30y 40z plus 10 minus 27x plus 9y minus 9z minus 18 equals to 0 तो 20x minus 27x minus 7x 30y plus 9 plus 39y minus 40z minus 9 minus 49z then 10 plus 10 minus 18 minus 8 equals to 0 minus multiply करिए 7x minus 39y plus 49z plus 8 equals to 0 the answer बहुत इजी खाली सिस्टम ऑफ प्लेन रा फार्मूला p1 plus lambda p2 यूज करिवो तो lambda फाइंड करे पे देखियो b रे गोटे कंडीशन डिफरेंट कंडीशन देथिवो c रे डिफरेंट देथिवो d रे डिफरेंट देथिवो तो lambda फाइंड करे पे डिफरेंट कंडीशन थाए से कंडीशन टा यूज करला में तुमको lambda मिलिवो lambda मिले इक्वेशन ऑफ प्लेन भी तुमको इजीली मिल जिवो second bit find the equation of plane required such a plane which contains a line of intersection of two planes and this required plane is perpendicular to third plane अछि required plane ta perpendicular to third plane solution तमे मु स्ट्रेट लाइन करछि तो तुमे भाबि देबो मते खाली एक्सप्लेन करे पे मु स्ट्रेट लाइन करछि तो बट इस प्लेन अछि तिला p1 दिस वन ला p2 तो मु प्लेन कले ठीक डायग्राम ठीक देखा जीवनी तो हमें खाली बुझे रछि तो मु लाइन करी कहउछि तो तुमे भाबस दिस वन p1 अछि प्लेन 1 और दिस वन ला प्लेन 2 तो रिक्वायर्ड प्लेन करना पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स अछि एंड परपेंडिकुलर टू थर्ड प्लेन दिस वन हमरो थर्ड प्लेन तो p1 इक्वल टू x plus 2y plus 3z minus 4 equals to 0 second plane 2x plus y minus z plus 5 equal to 0 and p3 equal to here 5x plus 3y plus 6z plus 8 equals to 0 तो मते p1 p2 p3 मिल गला बट हमर रिक्वायर्ड अछि p तो मते यार इक्वेशन दरकार इक्वेशन ऑफ प्लेन p दरकार एनी प्लेन passing through the line of intersection of p1 and p2 is p1 plus lambda p2 equals to 0 तो मुझे सेम सिस्टम ऑफ प्लेन रो इक्वेशन यूज करछि तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन टू प्लेन्स इज p1 plus lambda p2 equal 0 तो हमरा p1 ऑलरेडी अछि तो x plus 2y plus 3z minus 4 plus lambda into p2 2x plus y minus z plus 5 equals to 0 तो हमरा रिक्वायर्ड अछि करना प्लेन रिक्वायर्ड प्लेन टा परपेंडिकुलर टू p3 दे छी तो हमें आगे जनरल फॉर्म को चेंज कर दवा तो lambda मल्टीप्लाई करी x plus 2y plus 3z minus 4 plus 2 lambda x plus lambda y minus lambda z plus 5 lambda equals to 0 तो मु कोन पे जनरल फॉर्म को चेंज करछि से भी तुमे बुझ परिबा टिके वेट करो तो x x अछि कॉमन ने के लिए 1 plus 2 lambda into x then 2 plus lambda into y plus 3 minus lambda into z minus 4 plus 5 lambda equals to 0 तो हमारा इक्वेशन आसी गला जे बट लैम्डा टा अननोन अछि तो लैम्डा मिलला पर हमारा कंप्लीट इज सॉल्यूशन तो मो जनरल फॉर्म को कोन पे चेंज करे ना हमारा रिक्वायर्ड प्लेन टा परपेंडिकुलर टू p3 अछि तो हमने मोटे परपेंडिकुलर कंडीशन अप्लाई करिवि तो मते प्लेन p रो नॉर्मल रो डायरेक्शन रेशियो दरकार आ p3 तो अछि तारो नॉर्मल रो डायरेक्शन हमको ऑलरेडी गिवन दे दे छै नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ direction ratios of normal n
to the plane P R. The direction traces of normal to the plane P are 1 plus 2 lambda, 2 plus lambda, x, y, z coefficient, 3 minus lambda. Then direction ratios of normal N3 to the plane P3 R. तो P3 अच्छी 5, ये 3 6 अच्छी, तो मतलब direction ratios बनला 5 3 6. But already given the P perpendicular to P3. Since P perpendicular to P3, that implies that N perpendicular to N3. So implies that perpendicular condition apply करियो तो A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0. So A1 A2 5 into 1 plus 2 lambda, B1 B2 3 into 2 plus lambda, C1 C2 6 into 3 minus lambda, 6 into 3 minus lambda equals to 0. Then simplification करेगा 5 plus 10 lambda plus 6 plus 3 lambda plus 18 minus 6 lambda equals to 0. 10 ये 3 13 minus 6 equal to 7. 7 lambda, 5 plus 6 11 plus 18 plus 11 plus 18 29 equals to 0. So this implies lambda equals to minus 29 by 7. तो मतलब lambda value मिलला minus 29 by 7. Then कौन करियो ना lambda value को put करियो ना equation 1 रे. Therefore the equation of required plane one plus 2 into minus 29 by 7 into x plus 2 minus 29 by 7 into y, 3 minus 29 by 7, ये plus 29 by 7 into z, minus 4 plus 5 into minus 29 by 7 equals to 0. So this implies 7 29 into 2 minus 58 divided by 7 into x, 14 minus 29 by 7 into y, 21 plus 29 by 7 into z, minus ये minus 4 अच्छी तेसला minus 29 into 5 minus 4 minus 29 100 ये ला 45 145 by 7 equals to 0. बस हमको नेक्स्ट स्टेप को खाली सिंप्लीफिकेशन करके आंसर फाइंड करियर अछि. Implies that minus 51 by 7 into x plus differential of 15 minus 15 by 7 into y plus 50 by 7 into z यार सम कर दो छी minus 28 plus 145 by 7 equals to 0. So this implies minus 51x 7 रे multiply कर दो minus 15y plus 50z minus add कर ले 165 173. तो 173 equals to 0. तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दबा 51x plus 15y minus 50z plus 173 equals to 0. ला आंसर 51x plus 15y minus 50z plus 173 equals 0 ला आंसर. Third bit,
Find the equation of plane passing through the intersection of two planes and perpendicular to xy plane. तो ये बिट पूरा सेकंड बिट टाइप रो अछि तो इजीली भी तुमे सॉल्व करि परिबो. Let P1 be the plane ax plus by plus cz plus d equals to 0. Second plane P2 a1x plus b1y plus c1z plus d1 equals to 0. थर्ड प्लेन हमरो xy प्लेन अछि तो इक्वेशन ऑफ xy प्लेन इज z इक्वल टू 0. तो टिके प्रैक्टिस थीबो तो तुमर मन थीबो इक्वेशन ऑफ xy प्लेन ला z इक्वल टू 0. फर्स्ट प्लेन p1, दिस वन ला सेकंड प्लेन p2 और दिस वन ला रिक्वायर्ड प्लेन. तो रिक्वायर्ड प्लेन ता म p यूज करछि बट रिक्वायर्ड प्लेन ता करना परपेंडिकुलर टू xy प्लेन अछि. दिस वन ला xy प्लेन. तो इक्वेशन ऑफ xy प्लेन तो z इक्वल टू 0. तुम इजीली मने भी रखथिबो जे z इक्वल टू 0 ला इक्वेशन ऑफ xy प्लेन. तो एनी प्लेन passing through the line of intersection of P1 and P2 is P1 plus lambda into P2 equals to 0. P1 equals to ax plus by plus cz plus d plus lambda into second plane a1x plus b1y plus c1z plus d1 equals to 0. So this implies ax plus by plus cz plus d plus lambda a1x lambda b1y plus lambda c1z plus lambda d1 equals to 0. ax lambda a1x x common nechibo a plus lambda a1 into x plus b plus lambda b1 into y c plus lambda c1 into z. तो x कॉमन नहीं गली, y भी कॉमन नहीं गली, z भी कॉमन नहीं गली. कांस्टेंट अच्छी प्लस d प्लस लैम्डा इनटू d1 इक्वल्स टू 0. तो हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन पे खाली लैम्डा दरकार. ना मते बे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द रिक्वायर्ड प्लेन दरकार. तो डायरेक्शन रेशियोज of the normal n to the plane P R. The direction ratios are a plus lambda a1, b plus lambda b1 and c plus lambda c1. Then direction ratios of the normal n3 to the xy plane R. तो इक्वेशन z इक्वल 0 तो तारो x y z कोएफिशिएंट 0 0 1 अछि. तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द xy प्लेन आर 0 0 1. तो मते बोथ रो डायरेक्शन रेशियो मिल गेला बट हमो गिवन देछि p परपेंडिकुलर टू p3. तेसन हमरा p3. So this implies normal perpendicular to normal 3. So using perpendicular condition a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0. So a1 a2 0 into this. So ये 0 is 0 into a plus lambda a1. Since the 0 into this, so 0 into b plus lambda b1 plus 1 into c plus lambda c1 equals to 0. फर्स्ट टर्म 0 अछि, सेकंड टर्म 0 अछि, थर्ड टर्म ला c1 c प्लस लैम्डा c1 इक्वल्स टू 0. तो मते लैम्डा मिलला माइनस c by c1. जो लैम्डा मिलला बस तब तक हमें इक्वेशन रे भी पुट करि परिबो, एटी भी पुट करि, जोठी बेले तुमे पुट करि कि इक्वेशन ऑफ प्लेन तुमको फाइंड करियर अछि. देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ required plane
is ax plus by plus cz plus d lambda lambda equal to minus c by c1 मैं एटी भी यूज करी परिबा एटी कर दबा minus c by c1 a1x plus b1y plus c1z plus d1 equals to 0. तो this implies तो c1 अच्छी तो c1 रे मल्टीप्लाई करी c1 into ax plus by plus cz plus d minus c into a1x plus b1y plus c1z plus d1 equals to 0. Now c1 multiply कर दबा c1a into x plus c1b into y plus c1z plus c1d minus ca1x minus cb1y minus c1z minus cd1 equals to 0. तो x अच्छे कॉमन नहीं चाहिए c1a minus ca1x y अच्छे कॉमन नहीं चाहिए c1b minus cb1y z कॉमन नहीं चाहिए c1z ये तो कैंसिल हो जाउची c1z देन लो प्लस c1d minus cd1 equals to 0 लो दिस वाला रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन बहुत इजी खाली तुम्हें अप्लाई करिबो p1 plus lambda p2 equal to 0 देन तुम्हें परपेंडिकुलर कंडीशन यूज करी लैम्डा फाइंड करिबो लैम्डा तुम्हें 80 पुट करो जोठी पुट करो देन पुट करी के सिंप्लिफिकेशन कले आंसर आसे जिबा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन।